Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter 23 and the chapter name is comprehension passage. So first of all student, comprehension का मतलब क्या होता है? comprehension यानी कि unseen passage आपको दिया गया होगा, आपको उसको अच्छे से रीड करना है और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसी से रिलेटेड जिसमें आपको आंसर्स ढूंढने होंगे उसी पैसेज से ही और लिखना होगा, ठीक है? So let's read the passage and find out the answer, okay? So read the passage carefully and answer the questions that follow. Let's read it. Carl Benz, a German scientist, invented the modern car in 1888. Emil Roger worked for Benz in France. He had made cars in France. By 1900, many people were making cars in France and in the US. The first company to make only cars was Panhard at Levasseur in France. Panhard started in 1889. The Peugeot car company started in 1891 in France. In the US, Frank and Charles Dury started the Dury Motor Wagon Company in 1893. It was the first US car company. By 1902, Ransom E. Olds started the Olds Motor Vehicle Company. A year later, Henry Ford started the Ford Motor Company. Okay, it produced the Cadillac. All these early modern cars burned gasoline in France and Britain. Okay, in 1911, then they opened a factory in Denmark in 1923. Later, they opened a factory in Germany in 1925. Ford was one of the first manufacturers to use an assembly line. With an assembly line, factory workers could produce cars faster and safer than other production systems. Most modern cars still burn gasoline or diesel fuel. These cars cause air pollution. They make the air dirty. Now many people are looking for cleaner car fuel options and many car manufacturing companies are looking for cleaner fuels. Okay, so अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं which you have to answer. Okay, so first question over here is that take the correct option. So the first one is which company first built any car? कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले कार को बिल्ड किया? तो वो थी पैनहार्ड. ओके, कार्ल बेंज जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था मॉडर्न कार को 1888 में. फिर एमिल रॉजर वर्क थे, मतलब उन्होंने काम किया बेंज के लिए इन फ्रांस एंड उन्होंने कार बनाई फ्रांस में. बाय 1900 बहुत सारे लोगों ने क्या करा, फ्रांस में कार बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी पहली कंपनी थी. तो पहली कंपनी जिन्होंने कार बनाई थी वो पेनहार्ड एट लेवसोर थी इन फ्रांस. ओके, दैट इज ऑप्शन डी. ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन डिड प्योग्योट कार कंपनी स्टार्ट? प्योग्योट कार कंपनी जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? सो एज यू कैन सी ओवर हियर दिस कार कंपनी स्टार्टेड इन 1891 इन फ्रांस. सो 1891 यानी कि ऑप्शन डी पे आपको टिक लगाना है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट कार कंपनी? तो फर्स्ट कार कंपनी जो थी वो कौन सी थी? सो द फर्स्ट कार कंपनी, मोटर कार कंपनी, विच वाज द फोर्ड. ओके, सो यू हैव टू टिक इन द ऑप्शन ए. ठीक है, now next is which company was one of the first manufacturer to use an assembly line? So that is Ford only. Okay, now next one is car that use gasoline or diesel fuel cause. अब यहाँ पर बताया गया कि कार जो कि यूज करती है गैसोलीन और डीजल फ्यूल को वो क्या कॉज करती है? वो कॉज करती है एयर पोल्यूशन को. ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी जो अनसीन पैसेज दिए गए हैं उनको अच्छे से रीड करना है और उनके आंसर को कंप्लीट करना है. ठीक है, now student let's move into the D1, that is read the following poem carefully and answer the questions that follow. तो यहाँ पर आपको अनसीन पोम दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, so let's recite this poem. You are who, the landowner or the scarecrow? You wear his shirt, you hold his bow, you wear his pants. You are who, the landowner or the scarecrow? You do his job, scare the crow, scare the birds and other animals too. You are who, the landowner or the scarecrow? You are a look-alike, a simian twin. Who knows is your owner. Hiding behind you, I walk too early. No intention to spoil or steal, but you naughty dare to scare me too. You are who, the landowner or the scarecrow? So student, basically this poem is given about the scarecrow. So now you have to answer the question, tick the correct option. The scarecrow does not. Scarecrow क्या नहीं करता है? Okay, so scarecrow जो है वो crow को तो हटाता है, crow को भगाता है, birds को भी भगाता है डरा के. ठीक है, but वो क्या नहीं कर सकता? वो land को dig नहीं कर सकता. So you have to take the option C. Okay,
नाउ नेक्स्ट वन इज द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो क्या पहनता है? वेयर्स द शर्ट्स ऑफ द लैंड ओनर, वेयर्स द पैंट ऑफ द लैंड ओनर, बोथ ए एंड बी और नन. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द पोएट वांट्स टू. पोएट क्या करना चाहता है? स्टील द लैंड ओनर फ्रूट. लैंड ओनर के फ्रूट को स्टील करना चाहता है या फिर स्केयरक्रो को देखना चाहता है, या बोथ ए एंड बी या नन. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको बताया गया, नो इंटेंशन टू स्पॉइल और स्टील बट यू नॉटी डेयर टू स्केयर मी टू, यू आर हु. मतलब तुम मुझे ऐसे स्केयर कर रहे हो, ठीक है, जब मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम कौन हो? ओके. तो यहाँ पर आपने देखा वो स्केयरक्रो को देखना चाह रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज ऑप्शन बी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द पोएट कंफ्यूजेस द स्केयरक्रो विद द लैंड ओनर बिकॉज. क्यों ऐसे कंफ्यूज हो गए थे वो लैंड ओनर से? ऐसे बोलते कि वो लैंड ओनर जैसा ही लग रहा है, क्योंकि द स्केयरक्रो वेयर्स हिज पैंट, वेयर्स हिज शर्ट, वेयर बोथ हिज पैंट एंड शर्ट और नन. सो बेसिकली इट वेयर बोथ हिज पैंट एंड शर्ट. ओके. इस वजह से वो सेम लग रहा था. ओके. सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक कॉम्प्रिहेंशन जो अनसीन पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन को. ओके. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.